हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं मिस तनु एंड शी इज़ फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन। ये छोटे से टाउन से हैं। वैसे तो मैं भी एक छोटे से टाउन से ही हूँ, लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली हमारा कोर्स कंप्लीट किया है। और भाई ऑफ कोर्स आपको यदि इनका अनुभव सुनने को मिले तो शायद आपकी काफ़ी हेल्प हो सकेगी कि आप अभिषेक सर की क्लासेस क्यों ज्वाइन करें या उनका यूट्यूब का चैनल क्यों देखें, क्या फ़ायदा है और कैसे वो सिखाते हैं। तो तनु, कैसा लगा आपको हमारा सिखाने का तरीका? Sir, the experience of AIL was very good. When I come here, I was not able to speak English fluently. I could not say sentences, I could not pronounce words. But as I started to watch the classes, I know that how to say sentences, how to pronounce words, and now I can interact with people in English. तो कुल मिला के इस कोर्स में है क्या? मतलब यदि लोग जानना चाहें कि क्या सिखाते हैं अभिषेक सर, तो इस कोर्स में है क्या? Sir, you teaches us how to develop confidence, how to say sentences, and आप हमें बताते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमें आगे जाके जो कुछ भी करना है, हमें उसको मतलब हम ऐसा क्या करें जिससे जो हमारा गोल है हम उसको अचीव कर पाएं। राइट, चलो ये तो बात रही पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, थॉट डेवलपमेंट की, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में आपका क्या कहना है? क्लासेस में कैसा महसूस होता है जब आप क्लासेस अटेंड करती हैं? Sir, the atmosphere of AIL is very good. The teachers of AIL are very friendly with students. Here, when students come here, even when I come here to attend the classes, I never felt that I came here to attend a coaching. I always feel that I am coming here to learn something new, but not by our teachers. Your behavior with us is like friendly. I can ask anything you without any hesitation. I never felt hesitated here. गुड गुड। तो क्या ये क्लासेस कैसी हैं? क्या कोई भी व्यक्ति जो लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी तो इंग्लिश बहुत वीक है, क्या उसे भी फायदा हो सकता है? Yes. आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? Because my English was very weak. राइट, तो यहाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम के, या हिंदी मीडियम वाले कम सीख पाते हैं? No sir, I had been a student of UP board, and today I can speak English fluently. So here is nothing like that only CBSE board students can learn English here. No, nothing like that. UP board students also can speak English fluently by joining AIL. अच्छा, जो है जैसे लड़कियां बड़ा स्टाइल में रहती हैं, कई बार मैं नहीं सीख रही, तो उन लड़कियों के बारे में क्या कहेंगी आप जो अंग्रेजी सीखना नहीं चाहती या जो हाउस वाइफ बन के ही जीवन जीना चाहती हैं? In this matter, I want to say this: if a girl's family giving opportunity to them to do something new in their life, then they should take that opportunity. Don't miss this, because housewife ये तो normal सी life है. Today we are seeing girls are becoming very talented in every field. So every girl should be learn English, and this is in national I want to tell you, in national education policy of 2020, it is completely based on multilingualism. So it is very important to everyone. Right. So basically, do we teach grammar? क्या हम ग्रामर भी पढ़ाते हैं या हमारी जो क्लासेस हैं उनमें ग्रामर नहीं है? ग्रामर है, ऐसा नहीं है ग्रामर नहीं है, बट you don't compare the students that if they want to speak English fluently, they have to focus completely on grammar books. No. तो विदाउट ग्रामर हाउ डू आई टीच? मैं कैसे पढ़ाता हूँ बिना ग्रामर के? आप अभी तो नहीं बता पाओगे। Sir, you make another structure to teach us without grammar. Right. So I have already simplified everything. Grammar is already implied. ग्रामर उसमें पहले से ही निहित है, बट यू डोंट हैव टू पे मच अटेंशन टू ग्रामर इन द बिगिनिंग। शुरुआत में आप ग्रामर की ज़्यादा ध्यान आप भी नहीं देते, और मैं तो कभी आई नेवर लर्न स्पोकन इंग्लिश ग्रामर, और आई नेवर पेड अटेंशन टू ग्रामर।
आप जब हिंदी बोलना सीखते हैं तो उसमें आप ग्रामर को अलग से नहीं सीखते, साइड बाय साइड आपकी ग्रामर चलती रहती है। जो भी सेंटेंसेस आप बोलते हैं दे आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड आई ऑल्सो बिलीव इन द सेम। मैं भी इसी में बिलीव करता हूँ। तो मैम अब आपका आगे क्या प्लान है? यू ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 months कोर्स। Yes, I have completed 3 months course, but I will join it again. You will join it again. Yes. How will you be learning English by yourself? Sir, I do practice by myself and I try to find some new vocab words by Google, by asking my some friends, by reading some books. Good. So, how would you rate Abhishek's classes? मतलब आप यदि डिसिप्लिन वाइज, सिस्टम वाइज, प्रैक्टिस वाइज, एम्बियंस वाइज, तो आप इसे किसी चीज में मतलब नंबर यदि आप देना हो ओवरऑल 10 में से 10 out of 10 नहीं, 10 में से 10 तो मुझे ज्यादातर स्टूडेंट्स दे देते हैं। स्टूडेंट्स बड़े दरिया दिल होते हैं, हाँ, वो 10 out of 10 दे देते हैं। यदि आप नंबर कम करना चाहते हो no, there is no need to decrease your numbers. नहीं, ऐसा क्यों ऐसा लगता है? Because sir, I never felt that. राइट, तो मतलब यू गॉट द वैल्यू ऑफ योर मनी। Yes. राइट, सो गाइस आई होप यू गॉट मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस आंसर्ड। आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इसी तरह से अभिषेक सर के वीडियो देखते रहिए और घर बैठे बैठे अंग्रेजी और अंग्रेजी से संबंधित सारे सवालों के जवाब आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। सो इट वॉज नाइस टॉकिंग टू मिस तनु रागा। थैंक यू तनु। Thank you, sir. Okay guys, see you in another video.